excellence and their solutions. So, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। host to the one-day 7th National Conference that was conducted yesterday and a week-long faculty development program as commencing from today till 6th of August 2024. FDPs often include updates on the latest trends and advancements in various academic fields. This ensures that faculty stay updated with the current industry standards and the emerging research, which they can incorporate into their teaching and research. We are delighted to share with you all that Guru Nanak College of Education, through its week-long faculty development program on the most relevant theme, that is G20, One Earth, One Family, One Future, achieving through quality education, is commencing from today and is going to play host to the experts in the field of education as resource persons for the scheduled technical sessions in the upcoming days. With this, it becomes my duty to inform all of you present here that the scheduled resource person for today was Professor Sangeeta Chauhan ma'am, and I'm using the word was because due to some last minute professional commitments, ma'am couldn't come. And here we have amongst us our principal ma'am, our honorable principal ma'am, filling in to make sure that we have a good start, an auspicious start to the faculty development program that is there. So today we are going to get enriched by the technical session that is going to be taken by Principal Ma'am Dr. Jyoti Bhalla, please. She is the resource person of today's technical session. We are also expecting some eminent members from the Delhi Sikh Gurdwara Management Committee today in a while. And therefore, we will be carrying forward with the inauguration, the official inauguration, in fact, with the lamp lighting ceremony, the Shabad, in a while once they arrive. But not like to keep you waiting since you are here since morning, and we will be starting with the technical session. And this makes it compulsory for me to introduce Principal Ma'am to you, which is just my duty. Otherwise, you all are very much familiar with Ma'am. So Dr. Jyoti Bhalla Ma'am, she has her PhD in education, NET in education, and of course, Master in Education with MSc Chemistry and Computer Diplomas. Ma'am has participated in various orientation and refresher programs. Presently, Ma'am is working as principal of Guru Nanak College of Education since 2014. She has an experience of more than 16 years, with majority of her experience being concentrated here amongst us, that is in Guru Nanak College of Education, Punjabi Bagh, with 10 years plus experience. She has also worked in Institute of Vocational Studies with 5 years plus experience and Jamia Millia Islamia for 6 months plus experience. Ma'am has a lot of publications to her name with research papers accounting to almost 12. Ma'am has edited books, lessons, almost like this is counting up to 10. With 10 she has been a resource person to 10 events and have presented her papers there. Ma'am is also a content creator for ICT mediated teaching learning in pedagogy of science and chemistry, as well as educational psychology. Ma'am's interest area includes ICT, chemistry pedagogy, and science pedagogy. Ma'am has been on the inspection as visiting team member for National Council for Teacher Education NCTE for approval of BEd, BA, BSc, ITEP. Ma'am has also been a worthy member of KVS selection panel and has been a member of NIOS screening committee panel as well as developed curriculum for NIOS. Ma'am is also a reviewer for various national and international journals. Ma'am has been a convener of various events at national and college level, and Ma'am's remarkable achievements include GGSIPU DHE track inspection, where it is all because of Ma'am's guidance, Ma'am's mentorship, and Ma'am's leadership that Guru Nanak College of Education
was able to score 90% with an A grade. That was the highest grade. This grade is being maintained in the leadership and the mentorship of Principal Ma'am for more than 9 years now. So the college has been, upgraded from B to A in JAG as well as B to A plus. That is a double upgradation happening for the first time in the history of IP university colleges or for any college in that matter when it comes to SFRC inspection. So our fifth SFRC grade was from B to A plus, which is the highest, and that was the double accreditation for any college to achieve. So this has all been due to ma'am, and with this, I take pleasure to invite ma'am onto the stage, who is also the convener of this event. And also, I would like to request the coordinators. So, because before I could ask ma'am to start with the technical session, we would like to felicitate you, ma'am. So, coordinators of the event, Ankita ma'am and Dr. Charu Sethi ma'am, please felicitate ma'am, principal ma'am. This is a token of love and respect from all of us as we are eagerly looking forward for a technical session by Principal Ma'am on the ongoing theme G20, One Earth, One Family, One Future. And as a custom, so ma'am is also felicitating the coordinators of the event, Dr. Charu Sethi and Dr. Ankita Masi ma'am. There are people in front of you and there are people working behind the scenes. So these are the faces working behind the scenes from the last couple of months tirelessly to make it all possible and to make sure that everything runs smoothly, even if we get a last minute glitch like this. Thank you for all of your cooperation, ma'am. The stage is all yours. So good morning, all of you. Being the topic of yesterday's national conference also, we would have some kind of general orientation, idea regarding what is this G20 and what is the theme of it and what has been done under the Indian presidency during 2023 from December 2022 to November 2023. India was the host for this presidency, and under its presidency, so many new insertions, so many new agendas, so many new priorities have been laid by the Indian government. As we know that 83 pages document which was put up by the Indian dignitaries, and it was wholeheartedly accepted by all the international dignitaries. So continuing with that, we all know that G20 is an international intergovernmental economic cooperation forum. Since it is an economic cooperation forum, but we all know that economy always influence education. Without funding, no infrastructure can be there. Without funding, no admission process can take place, no advertisement, no publicity, no admission prospects, no counseling sessions. Without ICT needs infrastructure, that also requires some kind of funds. So all this is a cyclic process. Economy, influence, education. So likewise, if G20 is that not directly influencing education, it is indirectly influencing education because economy influences education.
That is why the focus is on G20, its paradigms, because because of it, when we allocate some kind of fund for education, quality increases, and when quality increases, then stagnation and dropouts can be taken care of. So, Economic Cooperation Forum comprising of 19 sovereign countries, एक तो 19 sovereign countries and one Union, European. Other than this, European African is also added to it now. By influencing the economic development, the G20 indirectly impacts the education sector by focusing on issues. What kind of issues the economic sector this G20 is focusing on? First of all, it is focusing on the accessibility, whether the education resources are accessible to the remote areas as well as not. The inclusive education, all the minorities, including the transgenders, are taken care of or not. The digital literacy, e-content is to be available to remote areas as well. Online education should be accessible to all. Then we have skill development, all kind of skills, including the vocational skills. कल भी जब धनंजय सर बात कर रहे थे कि we should be job creators, not job seekers. तो skill development, then lifelong learning. फिर यही बात हुई थी जो हमारे लाइब्रेरियन प्रवीण जी ने एक एग्जाम्पल दिया था कि हमें शार्प करके रखना है अपनी एक्स को, तो वो जो शार्पिंग है दैट इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग. नहीं तो क्या होगा, वी विल बी पैसिव लर्नर्स बन के रह जाएंगे, वी विल नॉट बी दी एक्टिव कॉन्ट्रीब्यूटर्स, वी विल नॉट बी एबल टू एडजस्ट टू द मेन स्ट्रीम. नए नए जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, अगर हमने उसको अपडेट नहीं किया तो वी विल बी आउट ऑफ द रेस. So next will be lifelong learning. Other than lifelong learning is innovation in education. Innovations, new techniques as per new requirements. Computers 2003 में आया इंडिया में, बहुत ज्यादा प्रेवलेंट हुआ एजुकेशन में. जब 1983 में क्लास प्रोजेक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया, 2003 में स्कूल्स में आया. बट अदर देन दिस आप देखिए कि नाउ कंप्यूटर्स भी आउटडेटेड हो रहे हैं. व्हाट इज नेक्स्ट? रोबोटिक्स. Everything will be on through robots. Surgeries भी robots के through हैं. So this is innovation in education. We need to be updated on that also. Teacher training programs, because teachers ने कब B.Ed किया था. Now the scenario is different, so we need to upgrade our teaching skills also as per the contemporary requirements. Then we have sustainable development goals. कल भी बात हुआ, millennium goals पहले आया, 2015 तक achieve करना था, जिसमें we were failure. We will not be able to achieve those goals. So new agenda of sustainable goals, जो कि 17 है, यूनेस्को ने दिए हैं 17 गोल्स, जिसका एजेंडा है कि हमें 2030 तक इसको अटेन करना है, जिसमें एजुकेशन से रिलेटेड भी बहुत सारे गोल्स हैं. लास्ट ये है डिजिटल डिवाइड अमंग सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स. फर्स्ट स्लाइड ही अभी चल रहा है. सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप्स का ये जो डिजिटल डिवाइड को, कि यहाँ पे जो सिटीज में है, अर्बन एरियाज में है, दे हैव एक्सेस टू वाईफाई आल्सो, टैबलेट्स आल्सो, ऑल द जितने आपकी ये एक्सेसरीज होती हैं. बट द रूरल एरियाज, वहां तो टीवी भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, वाईफाई तो बहुत दूर की बात है. तो इसलिए पीएम बहुत सारी ऐसे पीएम विकास योजनास वेयर इन देयर इज अ प्रपोजल टू अडॉप्ट अ विलेज by eminent जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अंडर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के अंडर देयर इज अ प्रोविजन ऑफ अडॉप्टिंग विलेजेस, कि आप उनको विलेज को अडॉप्ट कीजिए. और बहुत सारे एमिनेंट पर्सनालिटीज ने, जैसे अमिताभ बच्चन हैं, सचिन तेंदुलकर, इन लोगों ने अडॉप्ट किए हैं. दे आर वर्किंग फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ दोज विलेजेस, कि वहां भी वाईफाई पहुंचे और इस तरीके का डिजिटल डिवाइड खत्म हो. कि डिवाइड क्या है कि एक तरफ बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और एक तरफ बिल्कुल भी एक्सेस या रिसोर्सेज नहीं है, वो डिवाइड को खत्म होना. तो ये दीज आर दी 21st सेंचुरी लर्नर चैलेंजेस, जिसको टेक केयर करने के लिए G20 में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कही गई है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन को इम्पैक्ट करता है. So therefore, by being the part of this influential group, India may also contribute and collaborate with other member countries on education-related issues as policy development, innovation and funding, sharing of best practices, learn from global experiences, access resources that align with its national priorities to improve quality in education across the country. India की
एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या बेस्ट पॉलिसीज हो सकती है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कोलैबोरेशन, वहाँ के जो बेस्ट कॉलेजेस में बच्चों के लिए रिजर्वेशन कोटा, यहाँ के कॉलेजेस में आउटसाइड इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्वेशन, और यहाँ के जो अच्छे कॉलेजेस हैं, आईआईटीज, इस तरीके के कॉलेजेस को बाहर के कंट्रीज में वहाँ भी कैंपस डेवलपमेंट करना, वहाँ रिक्रूटमेंट करना, या वहाँ उनके एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट करना, ये कुछ एजेंडाज हैं इस G20 में एजुकेशन को लेकर. So the G20 summit, it is held annually, as we all know, it is through rotating presidency, or 2023 में India held the presidency. The G20 New Delhi summit was chaired by Indian Prime Minister Shri Narendra Modi ji, with the theme Vasudhaiv Kutumbakam, or One Earth, One Family, One Future, that resonates with India's ancient belief that the world is one family. And in order to find solutions to the common challenges that the planet is facing, we must envision and act together, इंक्लूडिंग इन एजुकेशन. और इसके लिए जो 6 सेंट्रल, इससे पहले वाली 6 सेंट्रल फोकल पॉइंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला है ग्रीन डेवलपमेंट. कल भी बात हुआ था. टेम्परेचर राइजिंग, इट इज गोइंग एवरीवेयर, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड. सो टेम्परेचर मेंटेनेंस, इट इज वन ऑफ द प्रायोरिटीज जो लाइफ के अंडर इन्होंने लाइफ प्रोजेक्ट एक लॉन्च किया, जिसमें कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा फौना, ताकि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस या बायोस्फीयर इकोसिस्टम के हम हैजार्ड से वी कैन प्रोटेक्ट आवर अर्थ. और इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ. इंक्लूसिव ग्रोथ की जब बात आती है, देयर शुड नॉट बी एनी अंडर प्रिविलेज्ड या deprived sections of society. Accelerating progress on sustainable goals. Again, as we discussed, 17 sustainable goals हैं, तो उसके progress की हमने बात करी है यहाँ, कि how India can contribute towards attaining sustainable goals within the India and across the globe. मल्टीलेटरल डेवलपमेंट पैक्स की बात हुई है कल. मल्टीलेटरल एजुकेशन की जब बात हो रही थी तो वेरियस हायरार्की की बात हो रही थी. यहाँ पे एक और चीज है, मल्टीलेटरल बैंक्स की बात हुआ है, जहाँ पे देयर शुड बी ए कंसेंसस ऑन प्रोवाइडिंग दी फंडिंग, providing scholarships, providing reservation to students, and allocating funds. There should be an international agency for laying the guidelines कि किसको किस तरीके का फंड एलोकेशन होना चाहिए, और किस कंट्री में एज पर दी, जैसे इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की बात होती है कि इक्वालिटी इज व्हेन वी आर गिविंग इक्वल. मेरे पास 10 है, मैंने एक एक 10 लोगों को दे दिया, लेकिन मेरे पास 10 है. और इक्वलाइजेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो एज पर नीड मैं दूंगी, कि जिसको 2 की जरूरत है तो मैं 2 दूंगी, जिसको 5 की जरूरत है 5 दूंगी, जिसको 0 की जरूरत है तो 0 दूंगी. दिस इज इक्वलाइजेशन. तो दिस इज हाउ इक्वलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इक्वालिटी. तो हम इक्वालिटी की बात नहीं करते, हम इक्वलाइजेशन की बात करते हैं कि देयर इज अ जीरो. जब आपने रेस में दौड़ाना है तो पहले आपको 0 पे सबको लाना पड़ेगा. जो पीछे हैं, जब तक वो लाइन पे 0 पे नहीं आएंगे, वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इक्वली. So we have to make those arrangements wherein we can promote those which are behind which are lagging behind, कि आप उनको पहले 0 पे लाएं, so that healthy competition. इसीलिए रिजर्वेशन की बात भी होती है. So last है टेक्नोलॉजिक नहीं, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट इज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर. जैसे हम यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात होती है कि आजकल ई लाइब्रेरी, डिजिटल नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंडिया में है. इसी तरीके से इंटरनेशनल कंटेंट, आप उसमें जितने इंटरनेशनल थीसिस हैं, शोध गंगा एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप जितनी इंटरनेशनल थीसिस वो ई टेक्स्ट की फॉर्म में अवेलेबल है, वो आप अपने एरिया से रिलेटेड रिव्यू करने के लिए आपको बहुत हेल्प हो जाती है. यू नीड नॉट गो टू विजिट ऑल द लाइब्रेरीज, अलग अलग लाइब्रेरीज में नहीं जाना पड़ता. अगर आप शोध गंगा की सॉफ्टवेयर को आप यूज करना जानते हैं. नेक्स्ट वी हैव शोध शुद्धि एंड शोध सिंधु ऑल्सो. शोध सिंधु में आपको बुक्स मिल जाती हैं, फुल टेक्स्ट बुक्स. और शोध शुद्धि wherein we can check the plagiarism, कि आपके पेपर्स आते हैं, उसे हमें we need to check कि इसमें कोई कॉपी पेस्टेड कंटेंट या कॉपीराइट प्रोहिबिटेड कंटेंट तो नहीं है. तो उसके लिए these are the softwares जो इंडियन गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद इंटरनेशनल एजेंसीज प्रोवाइड करवा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट. We need to just take the training to use these softwares, और उसके ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट पे ये अवेलेबल होने शुरू हो गए हैं. We just need to download, go through the steps how to use those softwares, and we can always accommodate these things in our teaching and learning.
तो इसके बाद लास्ट है वुमेन लेड डेवलपमेंट। कल भी बात हुआ था कि वुमेन की, आपने पिक्चर भी देखा था, अजीत मैम ने दिखाया था कि वुमेन के साथ कितने कंस्ट्रेंट्स हैं। और क्यों हम बात करते हैं, ठीक है पैटर्निटी लीव की अब बात कर रहे हैं, मैटर्निटी लीव की बात कर रहे हैं, लेकिन जब एक वुमेन काम करने आती है, मैटर्निटी लीव के बाद जब वो आ रही हैं काम करने के लिए, बच्चा इतना बड़ा तो नहीं हो जाता कि वो कॉलेज जाने लग गया है या सेल्फ इक्विप हो गया है, अपना ध्यान खुद रख सकता है, तो हम क्यों नहीं उनके लिए डे केयर फैसिलिटीज को एक मैंडेट बना देते हैं फॉर एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, फॉर एवरी नॉट ओनली एजुकेशन, फॉर एवरी इंस्टीट्यूशन और कंपनी और एनी इंडस्ट्री, ताकि लेटर ऑन जो उनको इतनी लीव देनी पड़ती है, सम आर बाउंड टू रिजाइन ऑल्सो बिकॉज ऑफ दीज कंस्ट्रेंट्स कि नॉट एबल टू लुक आफ्टर द फैमिली। सो विमेन लेड डेवलपमेंट भी एक ऐसी प्रायोरिटी है जहां हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है टू बी at par with the international or other countries. Further, within the G20 framework, India has also taken 4 major initiatives aligning with global standards to enhance education in India, जिसमें इन्होंने 4 बातें की इसी G20 प्रेसिडेंसी में। स्किल इंडिया की बात किया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, ग्लोबल इंडिया एंड क्रिएटिव इंडिया। जब स्किल इंडिया की बात किया है तो integrating vocational education across the curriculum, that is why NEP 2020 also recommended कि आप फ्लेक्सिबल करिकुलम कीजिए, मल्टी एंट्री एग्जिट ग्रुप कीजिए, कि अगर बच्चा कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिट लेना चाहता है और री एंट्री लेना चाहता है तो देयर शुड नॉट बी प्रॉब्लम। एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स रहेगा जहां पे उसने जितने कोर्सेज कर लिए हैं वो क्रेडिट्स स्टोर हो जाएंगे, उसके बाद फिर वो रिवाइव करते हैं, फिर वो क्रेडिट्स ऐड होने शुरू हो जाएंगे और उसके बेस पे उनको जो पैरामीटर्स डिसाइडेड है कि 1 ईयर का अगर कोर्स किया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 इयर्स किया तो डिप्लोमा के मिलेगा, 3 इयर्स किया तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 4 इयर्स किया तो इस 3 इयर्स में डिग्री मिलेगा। तो इस तरीके की जो चीजें हैं उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ये डिजिटल या स्किल इंडिया की बात करी गई है। स्किल इंडिया में आपको शुरू से अगर वोकेशनल ट्रेनिंग मिलेगी देन यू विल बी जॉब क्रिएटर्स। आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी गई, एंटरप्रेन्योरशिप ये वाला पेपर हमने बीएड में एज ए exclusive foundation paper भी इंट्रोड्यूस किया है इन 2 years B.Ed program. Earlier it was not there. है ये वाला पेपर आप पढ़ रहे हैं, आप पढ़ेंगे अगर नहीं पढ़ा तो। फिर डिजिटल इंडिया में आईसीटी रिलेटेड जब हम बात कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया की बात में जैसे हम यूपीआई की पेमेंट्स बहुत इजी हो गया, आपको बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन के लिए, पासबुक एंट्रीज के लिए, पासबुक मेंटेनेंस के लिए। ग्लोबल इंडिया की हम बात जब करते हैं तो ग्लोबल इंडिया मतलब we need to collaborate through what is going on in other countries, जो भी उनकी अपकमिंग नई नई स्ट्रेटजीज आ रही हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, नया नॉलेज हो रहा है, इतनी रिसर्चेज हो रही हैं, we need to be updated। और इंडिया को इंडियन सिटीजन has to be इंटरनेशनल सिटीजन। क्रिएटिव इंडिया की जब बात होती है तो क्रिएटिव मीन्स हाउ वी आर inculcating creative thinking in the minds of our learners। पहली ही लाइन है एनईपी 2020 की, टू इंकलकेट हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एंड प्रोमोटिंग क्रिएटिव थिंकिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो जब क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव इंडिया यही है, इसको आप यूनिक इंडिया, इंडिया को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाने की बात हो रही है। इसके लिए स्टेम्स का प्रोजेक्ट एनसीईआरटी बहुत प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है जहां आप स्टूडेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है, आप अपने इनोवेटिव आइडियाज दीजिए, आपको फंडिंग मिलेगा, आप उस प्रोजेक्ट्स को लॉन्च कीजिए, उस पर काम कीजिए और जो भी आपकी इनोवेशन है उसको आप पब्लिश कीजिए, ताकि हम उसे एक जो यूनिक आइडियाज हैं उसको प्रमोट कर सके, नर्चर कर सके और कहीं ना कहीं इंडिया की और ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके। और if we look at Indian education through perspective of G20, then there are 2 aspects. Whenever we, for any country, if we look at the education of that country, so within that country what development is taking place, and across the globe what development is taking place. So India within itself and India connecting with other countries. तो 2 पर्सपेक्टिव्स हैं इसको देखने के लिए। फर्स्टली इफ वी से दैट इंडिया कनेक्टिंग टू इटसेल्फ, तो इसमें ज्योग्राफी, कल्चर, एजुकेशन एंड इकोनॉमी 4 इसके पिलर्स हैं या पैरामीटर्स हैं। ज्योग्राफी कैसे कनेक्ट होता है एजुकेशन से या इंटरकनेक्टेड कैसे है? ज्योग्राफी में जैसे लैंडस्केप्स हैं, ट्रांसपोर्ट है, नेचर है, देन वी हैव environment, landscape, transport, which is connected to culture. Culture
हेरिटेज है, अभी नालंदा आपने देखा, नालंदा को डेवलप किया गया है, हमारा कल्चर है, ऋग्वेद जितने भी हमारे वेद हैं या थ्रू चैंटिंग ऑफ ओम, इसे हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी रिगार्ड किया गया है बाय यूनेस्को। क्यों किया गया है इसको? अदर देन दिस, जो हमारे ऋग्वेद हैं, इससे ज्यादा इनको कोई इस तरीके का कल्चर नहीं मिला है जिन्होंने प्रपोज किया हो टू गेट रजिस्टर्ड इन दैट रजिस्टर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ह्यूमैनिटी। और ये इस वर्ल्ड रिनाउंड, इसको वर्ल्ड यूनेस्को ने एक्नॉलेज किया है। ऋग्वेदा को एज अ स्क्रिप्ट, इंटरनेशनल स्क्रिप्ट या हेरिटेज ह्यूमैनिटी स्क्रिप्ट के तौर पे रजिस्टर किया गया है। अभी और भी बहुत सारे हैं जो अंडर द पाइपलाइन है, विच आर देयर टू बी रजिस्टर्ड। एक शेवा करके है, पौंडीचेरी के स्क्रिप्ट है, उसको भी यूनेस्को ने रजिस्टर किया है एज अ इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज स्क्रिप्ट। दो तो है, एक ऋग्वेदा है एंड शेवा है। शेवा इज रिलेटेड टू शिवा, तो वो पौंडीचेरी लाइब्रेरी में है। दिस ऋग्वेदा जो है वो पुणे की लाइब्रेरी में है, एंड देयर इज वन जम्मू कश्मीर लाइब्रेरी में है आर्किटेक्चर रिलेटेड, वो अभी अंडर प्रोसेस है टू बी सबमिटेड इन दी वर्ल्ड रिकॉर्ड रजिस्टर। तो इस तरीके से कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस एजुकेशन। इकोनॉमी थ्रू रेवेन्यू, फंडिंग, स्कॉलरशिप इज रिलेटेड टू एजुकेशन। अभी हमारी बात हुआ इस पे कि जब तक फंड्स नहीं होंगे एजुकेशन फ्लरिश नहीं कर सकता। एंड देन एजुकेशन लीड्स टू दी होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ये हम कई बार हर पेपर में ही पढ़ते हैं, साइकोलॉजी में भी, फिलोसफी में, कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, all the aspects need to be taken care of, whether it is physical, intellectual, social, emotional, moral, ethical, cultural, linguistic, all the aspects of learner needs to be taken care of. तो ये सारे parameters influence करते हैं for the holistic development of learner. That is why we need to be very particular and cautious regarding the what development we want within India, inside किस कल्चर को हमें प्रिजर्व करके रखना है, ट्रांसमिट करना है, एनरिच करना है, कितना ट्रांसपोर्ट पे, इंटरकनेक्टिविटी पे ध्यान देना है। अगर आज आपके लिए बॉम्बे इतना मुंबई जाना बहुत ज्यादा फिजिबल हो गया है, तो वहां कोई पेपर प्रेजेंटेशन है जो आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, तो आप सोचोगे कि इट इज सो इजी टू कम्यूट, आई कैन गो देयर एंड प्रेजेंट माई पेपर। पर वही अगर 2 दिन लग रहे हैं आपको पहुंचने के लिए, तो आप थोड़ा सा रिलक्टेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांसपोर्ट या कनेक्टिविटी। सो दीज आर द थिंग्स विच केटर टू योर every learner's educational development. Secondly, if we think of how education is impacting, so India connecting to other countries, geography through flora, fauna, biosphere, protection, conservation is connected to culture. Then culture, we adapt through other countries' culture, we adapt, we exchange the cultures with other countries. दिस इज हाउ इट इज कनेक्टेड टू इकोनॉमी। वो आते हैं, टूरिज्म के लिए आते हैं, हमारे यहाँ फॉरेनर्स आते हैं तो कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, हम भी वहां जाते हैं, कल्चर एक्सचेंज होता है। जो भी हमने मंडपम बनाए हैं, जो हमारी हेरिटेज है, जहाँ भी वो विजिट करते हैं, हमारे कल्चर के बारे में वो स्टडी भी करते हैं, दे कंडक्ट रिसर्चेज ऑल्सो। और ट्रांसपोर्ट के थ्रू, बिकॉज मीन्स ट्रांसपोर्ट इज देयर, सो दैट इज वाई ज्योग्राफी इज कनेक्टेड, geography is connected, culture is connected, culture is connected. When they study about the culture, education is connected. और education में culture itself is education. कल अगर आपने धनंजय सर का सुना हो, culture itself is education. तो ये interconnected है, and economy through investment, employability is connected to education. So equitable, inclusive, technological, quality education prepares Indian learners to be global citizens and to prepare India as knowledge superpower. Therefore, for strengthening Indian higher education system within itself and globally, the first Education Commission of Independent India, बहुत सारे education commissions आए हैं, कितने आए हैं, कितने आ चुके हैं अभी तक education commissions? 1968 में आया था, क्या आया था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968, उसके बाद 1986 आई थी। आप लोगों को बहुत ज्यादा ये पढ़ाया नहीं जाता है, बट 1975 में भी एक पॉलिसी आई थी जिसमें इन्होंने 8+3 करिकुलम की बात कही थी, बट बिकॉज इट वॉज नॉट गिवन वेरी, इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड ऑन हाई लेवल, बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला,
because of not being getted wholehearted acceptance, it was not highlighted. Otherwise, there is a policy in 1975 also, National Education Policy of 1975. तो 1968 में आया, 1975 में आया, 1986 में आया, then Program of Action of 1992 आया, और उसके बाद 34 years के बाद National Education Policy 2020 आया. So इस पॉलिसी के आने के बाद फर्स्ट जो कमीशन ऑन हायर एजुकेशन, हमेशा ये बात होती थी जब तक हायर एजुकेशन का कमीशन नहीं आएगा हायर एजुकेशन स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकती या अंडर डेवलप्ड ही रह जाएगा इंडिया में. तो आफ्टर एनईपी 2020 देयर इज अ नेशनल कमीशन आल्सो ऑन हायर एजुकेशन व्हिच इज नोन एज हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. इसके 4 वर्टिकल्स हैं, 4 काउंसिल्स आर देयर. वन इज रिलेटेड टू ग्रांट्स एंड फंडिंग, सेकंड इज रिलेटेड टू गाइडलाइंस जिसको हम एक्रेडिटेशन कहते हैं, थर्ड इज रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड फोर्थ इज रिलेटेड टू जनरल पैरामीटर्स की एजुकेशन सिलेबस करिकुलम क्या होगा. तो ये 4 काउंसिल्स इन्होंने बनाए हैं जिस काउंसिल्स के थ्रू HECI वर्क कर रहा है. और इसमें इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं फॉर हायर एजुकेशन, क्योंकि मैं G20 को ओनली फिर थ्रू हायर एजुकेशन से हम कनेक्ट कर रहे हैं, नॉट टू प्राइमरी, नॉट टू सेकेंडरी, नॉट टू स्कूल एजुकेशन, ओनली टू हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन स्टार्ट्स आफ्टर 12, तो हम उसकी बात कर रहे हैं. तो हायर एजुकेशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने आफ्टर एनईपी 2020 या G20 प्रेसिडेंसी की जो रिकमेंडेशंस आई हैं उसे देखते हुए व्हाट स्कीम्स दे हैव लॉन्च्ड. सबसे पहली स्कीम है वर्ल्ड क्लास टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस. इसके लिए इन्होंने इक्विप की बात किया है कि एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूजन प्रोग्राम. सो इक्विप शुड बी देयर, टी इक्विप फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टी इक्विप शुड बी देयर. देन इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, ये प्रपोजल्स हैं कि इस तरीके के इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस या गवर्निंग एजेंसीज बनाए जाएं जो रेगुलेशंस ले डाउन करें सो दैट वी कैन हैव सम एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट्स. मशरूमिंग ऑफ इंस्टीट्यूट शुड बी क्रब, जहां पे क्वालिटी नहीं है those should not be promoted, only those institutions who maintain the quality. और वो quality के भी we should lay down some parameters so that those can be taken care of कि हम इसे international platform या India should be the developed country, not the developing country anymore. It should become the developed country very soon. और फंडिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी की बात करी गई है फॉर सेंट्रल हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. हायर एजुकेशन फंडिंग में 2 तरीके से इन्होंने फंडिंग का बात किया है. एक तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंडर, और एक उसके अदर देन दोज जो रिमोट एरियाज की फंडिंग की बात हुआ है हायर एजुकेशन फॉर फाइनेंसिंग एजेंसी. अदर देन दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर एंड ट्रेनिंग. तो जितने टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके क्या रेगुलेशंस होंगे एंड व्हाट शुड बी द फंडिंग, एलोकेटेड फंडिंग कितना होना चाहिए फॉर इन सर्विस टीचर प्रोग्राम्स एंड प्री सर्विस टीचर प्रोग्राम्स. एक भारत श्रेष्ठ भारत फॉर कल्चर कनेक्ट, कि हर स्टेट अपने कल्चर को प्रमोट करे, वहां के बच्चे दूसरे स्टेट में जाएं, दूसरे स्टेट के बच्चे आपके स्टेट में आए, और इस तरीके से आप कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करें अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत. प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप इज देयर, जो बहुत एकेडमिकली साउंड है, मेरिटोरियस बच्चे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का प्रोविजन. एंड देन वी हैव स्पार्क रिसर्च कोलैबोरेशन थ्रू स्पार्क, ग्लोबल इनिशिएटिव ज्ञान, स्पेशल एजुकेशन ग्रुप जोन्स SEZ, IKS रिसर्च सेंटर, इंडियन नॉलेज सिस्टम रिसर्च सेंटर गवेषणा, इम्प्रिंट, इम्प्रेस, स्टार्स एंड यंग इंडिया कॉम्बैक्टिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन. ये कुछ स्कीम्स हैं जिसमें सोशियो इकोनॉमिक जो अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप्स हैं या हमारी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है. इंडियन नॉलेज सिस्टम क्या है, कल भी इस बारे में थोड़ा सा जिक्र आया था पर इलेबोरेट नहीं हुआ था. इंडियन नॉलेज सिस्टम को रूसा या जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है वो बहुत प्रमोट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रमोट कर रहा है. इसलिए प्रमोट कर रहा है क्योंकि जब इंडिया के ऋग्वेद और इनको वर्ल्ड हेरिटेज रजिस्टर्स में रिकॉर्ड किया जा रहा है तो दैट मीन्स कुछ तो होगा. 0 हम इंडिया ने बताया, डेसिमल का कॉन्सेप्ट इंडिया ने बताया. तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इंडिया जब प्रमोट कर रहा था, इंडिया ने कब बता दिया था, कौन सी BC में, 5th सेंचुरी BC में, बिफोर क्राइस्ट, 500 साल पहले के हैं ये वेदास. किसने लिखे थे वेद, किसने लिखे थे, वेद व्यास ने. और वेद व्यास ने जो वेद लिखे उन वेदों को जब लिखा गया था तो वो लिखित फॉर्म में नहीं थे, वो साउंड्स की फॉर्म में थे.
उन साउंड्स के फॉर्म को ही पढ़ाया और समझाया जाता था, एंड आफ्टर दैट उसको आदि शंकराचार्य जी ने कन्वर्ट किया रिटन मैन्युस्क्रिप्ट से, वो किया था 5th सेंचुरी बीसी आफ्टर एडी। 5th सेंचुरी बीसी में ये साउंड फॉर्म में थे बाय वेद व्यास, और 5th सेंचुरी एडी में आदि शंकराचार्य ने इनको रिटन फॉर्म में क्रिएट किया वेद। तो ये जो हमारे स्क्रिप्ट्स हैं इनका डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। जब हम जीरो का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, डेसिमल्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और बहुत सारे हमारे ऐसे स्क्रिप्ट्स हैं जो आप कल बात हुआ था कि उन्होंने जो मुस्लिम इन्वेडर्स थे तक्षशिला की लाइब्रेरी जला दिया गया, कितने सारे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स उसमें जल गए, एंड वी डू नॉट हैव कॉपी ऑफ दैट। जो बच पाए उसमें ही इतनी नॉलेज है। तो इंडिया, यहाँ पे जो इन्वेडर्स आए वो यहाँ से सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स चाइना, ग्रीक, ये सारे ये अपने कंट्रीज में ले गए। दे वर डेवलप्ड कंट्रीज, उस समय भी उनके पास प्रिंटिंग मशीन्स थी। दे गॉट दोस थिंग्स प्रिंटेड और अपने नाम से उन्होंने उसको पब्लिश किया, सर्कुलेट किया, बट अदरवाइज वो जो सारी नॉलेज थी वो इंडिया की थी। इंडिया ने ही बताया था ये यूनिवर्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में। आप जंतर मंतर पे जाइए तो आपको डे टाइम कैलकुलेशंस, तो ये सब इट वाज, और दिस नॉलेज वाज गिवन बाय इंडिया ओनली। तो जब हम बात करते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम, अभी जैसे बात होती है कंप्यूटर सब्जेक्ट अलग से नहीं पढ़ाया जाता है, कंप्यूटर्स आर इंटीग्रेटेड अक्रॉस द करिकुलम। का मतलब ये है कि कंप्यूटर को एज अ हवा नहीं, कंप्यूटर को एज अ सब्जेक्ट नहीं कि उसमें बच्चे वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इंटरनेट पढ़ रहे हैं। इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड अक्रॉस द करिकुलम। अगर बच्चा साइकोलॉजी पढ़ रहा है वो भी, उसमें भी कंप्यूटर इंटरनेट यूज हो रहा है, पेडागोगी सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है उसमें भी यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं इट हैज बीन इंटीग्रेटेड अक्रॉस द करिकुलम। इसी तरीके से नाउ द प्रपोजल इज कि irrespective of syllabus, irrespective of course, whatever program you are studying in, you have to study a paper on IKS, Indian Knowledge System। क्या है ये? एंशियंट नॉलेज सिस्टम, जो हमारे वेद उपनिषद में जो नॉलेज है, उसमें आयुर्वेदा में जो टॉक्सिक रिलेटेड, आज हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है या कोई इंसेक्ट बाइटिंग हो रही है, सांप ने काट लिया, हमारे पास इलाज शायद उस वेनम का नहीं होगा जो उन बुक्स में है। सो वो इतने एडवांस थे और इतने अल्ट्रा मॉडर्न थे जो हम आज तक भी नहीं है। सो वी नीड टू रिवाइव, रिवैम्प, रिक्रिएट उस एजुकेशन को जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन थी, क्योंकि वो आज की एजुकेशन सिस्टम से भी बहुत ज्यादा एडवांस है। तो इसलिए आईकेएस जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, इंडियन नॉलेज सिस्टम के दो पैरामीटर्स हैं, इट इंक्लूड्स द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम एंड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम। तो इंडियन, जब एंशिएंट एजुकेशन की बात आती है, जितने इंडिजिनस आर्ट एंड क्राफ्ट, इंडिजिनस स्पोर्ट्स, फोक, जितने फोक डांस हैं, कल्चर्स हैं, स्टोरी टेलिंग, फोक टेल्स हैं, और इंडिजिनस स्पोर्ट्स में जैसे आप गुल्ली डंडा है, खो खो है, पिट्ठू है, और इंडिजिनस आर्ट्स में हम ये भी सिखाते हैं कि अगर हम हैंडशेक नहीं करते, हम नमस्ते करते हैं, हमारा ये कल्चर है। तो नमस्ते, इसका एक सिग्निफिकेंस है कि इसमें हमारे जो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स जब प्रेस होते हैं वो ट्रिगर करते हैं हमारी आईज को, ईयर्स को और हेड को। हम जिससे मिलते हैं उसका नाम, उसकी फेस हम रिकॉग्नाइज रख पाते हैं। So there is a scientific concept behind it, scientific theory principle behind it. हम पैर छूते हैं तो हम लाइव एनर्जीज को गेन करते हैं। दिस इज इंडियन नॉलेज सिस्टम। ये हम पढ़ेंगे, आप आज बीएड में नहीं पढ़ रहे हैं, आज से 5 साल बाद इट विल बी इंटीग्रेटेड इन द करिकुलम। एक पेपर जैसे मोक्स आया 2 साल 3 साल पहले, ऐसे ही आईपीएस में आपको एग्जाम देना होगा, उसमें ये चीजें आप पढ़ेंगे। आप तिलक लगाते हैं, हम हल्दी का तिलक लगाते हैं, इट इज बिकॉज ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है। वेडिंग में हल्दी लगाया जाता है, एंटीसेप्टिक होता है, आपको इन्फेक्शन से बचाता है। तो ऑल दीज रिचुअल्स आर एक्चुअली कनेक्टेड विद। आफ्टर मैरिज बहुत सारे उसमें बिछिया कुछ पहनते हैं, टोरिंग जिसको हम कहते हैं, ये आपके यूट्रस को स्ट्रेंथन करता है। तो एवरी जो हम रिचुअल कर रहे हैं, ये कोई बहुत सारी चीजें हैं। जब सती प्रथा है, दैट हैज टू बी डिस्करेज्ड, लेकिन बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स हैं दैट हैज टू बी प्रमोटेड आल्सो बिकॉज ऑफ द साइंटिफिक सिग्निफिकेंस। तो ये है इंडियन नॉलेज सिस्टम। और इसके बाद फॉर ई कंटेंट एंड ई
E-governance, there is a NEET, जिसको National Educational Alliance for Technology and National Academic Depository and EPG पाठशाला. जो बच्चे नहीं अपने formal education system से नहीं करना चाहते हैं, they want to pursue some course or higher education through distance learning या digital platforms के through, so they should be given opportunities for that. सर्वेज एंड रैंकिंग्स के लिए जैसे मैंने कहा मशरूमिंग ऑफ कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस नहीं होने चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन शुड बी देयर. तो NIRF इज देयर, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क. एक अटल रैंकिंग सिस्टम इज देयर, अटल जी के उसमें रखा गया अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनोवेशन अचीवमेंट्स. तो ये रैंकिंग पैरामीटर्स होते हैं. ASHE इज देयर, ASHE ऑल इंडिया सर्वे ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो इससे हम जितने हमारे एनरोलमेंट कितना हुआ, ड्रॉप आउट्स कितना हुआ, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है, बच्चों की फीस क्या है, एक्सपेंसेस क्या हुए, इंस्टीट्यूट की बैलेंस शीट क्या है, प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, लॉसेस क्या हो रहे हैं, कितना किस एरिया में आप एक्सपेंस कर रहे हैं, कहाँ बढ़ाने की जरूरत है, कहाँ कम करने की जरूरत है. तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, सर्वेस करके पॉलिसी मेकिंग के लिए रिकमेंडेशंस देते हैं, ताकि जब नेक्स्ट पॉलिसी बने, जैसे मन की बात के लिए PM मोदी जी हमसे मांगते हैं ना कि आप अपने मन की बात मुझसे कीजिए ताकि मैं अपने मन की बात आपसे कर सकूं. आप इनोवेटिव आइडियाज दीजिए, आप फोन पे भी कर सकते हैं, आप मेल भी कर सकते हैं, उनका ऐप डाउनलोड करके उसमें भी प्रोविजन है कि आप अपने आइडियाज दीजिए. तो इसी तरीके से ये जो सर्वेज होते हैं, रैंकिंग सिस्टम्स होते हैं, ये अपने जो इनकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये आगे रिकमेंड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज न्यू पॉलिसीज डिवाइस की जाती हैं. वोकेशनल एजुकेशन रिलेटेड NCBET, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अंडर नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन. तो वोकेशनल एजुकेशन को इतना प्रमोट किया जाए. आइए खाना पीना सब करना. Then we have for international outreach to the Study in India program, where we can offer more than 20,000 students per annum from international countries to visit our countries and pursue higher education in our country. We also have India to hold the IIT JEE entrance exam in 25 countries. As present, this JEE exam is it is held only in India. Now they will be promoting it across 25 other countries also, and IITs are set to branch in other countries. The branches of these IIT are renowned, eminent educational institutes of India, with the ranking of 125 amongst the global ranking of institutes. So India government is planning to open up new campuses in other countries as well. For ICT integration, we have Pragyata, Swayam, MOOCs, which is massive open online courses, Swayam Prabha, the digital channel of watching the educational programs. Then we have digital content also, the National Digital Library, which is free of access 24/7, EPG Pathshala, a gateway of ebooks, Shodh Ganga, where a reservoir of Indian thesis, Shodh Sindhu, e-journals, and we have hands-on learning through e-yantra, FOSSEE also, which is free open source software for education, spoken tutorial, virtual labs for hands-on practice without mitigating the expense or risk. And then we have national internship portals for students of engineering, e-governance also through Samarth portal, and we can track our progress through Vidwan software, which is expert database, national research network of professionals and eminent medical practitioners as well as professors. Shodh Shuddhi is also there, which we can detect the plagiarism. Academic Bank of Credits for students' academic repository. So all the teacher training colleges, including Guru Nanak College of Education, is the subset of India's educational set, also aligns with the national educational commitments within the G20 framework,
Guru Nanak College of Education exemplifies the crucial role of quality education in driving economic growth and social progress through fostering excellence and innovation in teaching and learning. Some innovations we have already introduced in our college. It includes the GNCE learning management system. The learning management system, as our students are very well versed with the system of teaching and learning, Microsoft Teams for computer aided learning, computer managed instructions, and blended learning for record keeping, attendance, evaluation, for pre-instructional material preparation. Then we have Guru Nanak College of Education is also trying to uh, consistently incorporate the National Education Policy 2020 recommendations. Like we have Aryabhatta Club in the college, we have done screening of IKS documentaries, जिसमें Gurukul hai, we have Ayurveda, then we have water management system also, we have Krishi Shastra. So ये documentaries we have already documented. Then gender inclusion curriculum, we are training our students and staff not to use he, she. What we are using is sie, zer, zai for he, his, him to be the gender neutral. Sie, zai, zer. These are the new terms, he, she ki jagah. Then we have gender inclusion fund also for scholarship that is provided to socio-economic disadvantaged sections of society. In college morning assembly, we have biographies of ancient gurus recited. Samarth ERP with Axis Bank collaboration. And in the college, we are focusing on higher order thinking skills, critical and reflective thinking, integrated approach, inquiry-based learning, hands-on experiences, experiential learning, and multilingualism. We are using Punjabi also, Hindi, English, and Sanskrit. So pedagogical techniques, as per NEP recommendations, we are using brainstorming, playway method, project method, and storytelling method. Initiative using ICT tools include Swayam, MOOCs is already a part of B.Ed syllabus. Sir, आप please लेना शुरू करो. Then we have digital library, Koha mediated library with Delnet, and ABC, the Academic Bank of Credit unique ID generation of our students. So thus Guru Nanak College of Education is also contributing to India's vision of equipping citizens with skills for global success. College dedication to high quality education mirrors India's persistent commitment, showcasing progress within the G20 framework. So this is all regarding today's technical session. Sir, because the technical session resource person was not available today because of her prior commitments and some meeting requirements. So that is why I have taken up this technical session. Now we will start with inauguration. Same line. As Principal Ma'am has already informed our guests that due to some last minute changes, we had to accommodate some things. But first things first, we have to introduce this event. सर कल हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी एक दिन की, मैनेजर सर आए थे और उसका पार्ट बने थे. बहुत सारे रिसोर्स पर्सन आए, डीन्स, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी के, और आज हमारा 7 दिन का जो हमारा वीक लॉन्ग फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसका आज फर्स्ट डे है. एंड सर थैंक यू कि आप आए, हमारा पार्ट बने. सो सर हम एक छोटी सी सेरेमनी जिसमें हम इनॉग्रेशन करेंगे और शबद कीर्तन से शुरुआत करेंगे. So this is a humble attempt, and ma'am please. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. We are delighted to share with you all that Guru Nanak College of Education, through its week-long FTP on the most relevant theme, that is G20, One Earth, One Family, One Future, achieving through quality education, as commencing from today, is going to play host
to the experts in the field of education as resource persons for the scheduled technical sessions in the upcoming days. ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਫੈਕਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ, ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। Distinguished guests from our parent body DSGMC, esteemed resource persons for today's technical session who was our own principal ma'am, honorable members of our college governing body manager sir, respected delegates, ladies and gentlemen, we have just taken the names जो physically present हैं, but हमारे को since हम लोग live telecast कर रहे हैं, so हम ये समझ के चल रहे हैं कि सब लोग हमसे virtually जुड़े हुए हैं, जिसके लिए मैम ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੋ ਲੈਣਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੇ ਨਾ ਸਮਾਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। This brings us to the auspicious moment of inaugurating today's event. Today, as we inaugurate the first day of our week-long faculty development program, we embrace the tradition of lighting the lamp, a symbol of enlightenment, wisdom, and the quest for knowledge. I would like to invite humbly invite our distinguished guest, Sardar Atma Singh Lubana ji, Vice President of Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, along with our respected manager, sir, Sardar Surjit Singh ji, accompanied with our principal ma'am, Dr. Jyoti Bhalla ji, to kindly come up and light the lamp. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। As we proceed with the lighting of the lamp, let me take a moment to express our gratitude to our privileged guests, our honorable members of DSGMC, our esteemed guest, Sardar Atma Singh Lubana ji, Vice President, Delhi Sikh Gurdwara Management Committee, our respected resource person for today's technical session, Dr. Jyoti Bhalla ma'am. All of your presence today enriches this gathering and sets a high standard for the discussion. I also wish to extend our heartfelt appreciation to the organizing committee, Sardar Rajinder Singh ji, Chairman, Guru Nanak College of Education, who is there with us virtually, Sardar Surjit Singh ji, Manager, Guru Nanak College of Education, जिस sir हमारे बीच में present हैं, and Dr. Jyoti Bhalla ma'am, Principal, Guru Nanak College of Education, who is also the convener of this FDP, as well as all the volunteers who have worked tirelessly behind the scene. With this, we conclude the lamp lighting ceremony. Now, to ensure a successful culmination of all of our efforts, we would like to bow down to Guru Nanak Dev Ji to seek his blessings. Let us join our hands and close our eyes as the divinity team of the college recites pious Gurubani Shabad from Guru Granth Sahib Ji. I would also like to request all of you to kindly cover your heads. ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਖੀਏ, ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਗੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच्ची तेरे मन सच्चे प्रेम सच्चे तेरे लोग सच्चे सच्चे तेरे धरणी सर्व विचार सच्चा तेरा मन सच्चा दीवार सच्चा दीवार सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा करम सच्चा निशान सच्चे दिल आके तंग करो सच्चे सब जान सच्चे सब जो सच्चे सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच प्यार सच जो हर जाए सच में कछ सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਕੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ
ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਮੀਨ ਸਿੰਘ ਨੋਨੀ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं साडे मानयोग मैनेजर सर सरदार सुरजीत सिंह शोही जी नूं यह सन्मान स्वीकार करके अपना आशीर्वाद दिओ। मैम सर को 2 शब्द के लिए बुला लें या आपकी आपकी प्रेजेंटेशन के बाद? नहीं? ठीक ठीक सर को जल्दी। सरदार आत्मा सिंह लुबाना जी ने सिख संगत की भलाई लई कई महत्वपूर्ण योगदान पाए हैं, जिस विच गुरुद्वारा प्रबंधक सिक्ख्या प्रोजेक्टां दी अगवाई अते समाजिक सेवावां दा प्रबंधन शामिल है। सरदार आत्मा सिंह लुबाना जी किरपा करके साडे नाल अपनी सोच साझी करो। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਡਮ ਜੋਤੀ ਭੱਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਟੀਚਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ B.Ed ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਮੈਡਮ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਸਟਾਫ ਹੈ, ਫੈਕਲਟੀ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰੋਗੇ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਲਜ A+ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੌਪ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਸਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਹੋਣ, GNMI ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ B.Ed ਕਾਲਜ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ,
ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈਗੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੀਐਡ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਜੌਬ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਡ ਕਰਾ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਾਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤੇ ਟੌਪ ਕਾਲਜ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋ ਬਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, प्रकाश कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो, हर जन राखे गुरु गोबिंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे, दयाल पुरुष बख्शन जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ उहाँ सचो। जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ उहाँ सचोए। ए इंस्टीट्यूट चढ़दी कला च रहे। एक बारी सारे स्टाफ ਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ बोल के इस प्रोग्राम ਨੂੰ ਸਥਾਈ बनाया। सर, ये आपका आशीर्वाद है जिसके लिए हम हमेशा वेट करते हैं कि आप हमारे इवेंट्स में आए और अपनी आशीर्वाद से हमें आगे और अच्छे से इस इवेंट को पूरा करने के लिए हमें प्रेरणा देते रहें। थैंक यू सो मच सर, आप अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के हमारे पास आए। और इसी के साथ सर हम यही कहेंगे कि अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें, प्रिंसिपल मैम, फैकल्टी मेंबर्स, मैनेजर सर, चेयरमैन सर, सब पे, और बच्चों पे इस खासकर जिनको आपने अपने शब्दों से प्रेरित भी किया, आपने उनको बताया, मोटिवेट किया कि ऐसे ही वो मेहनत करते रहें। थैंक यू सो मच सर। सर मैम आपकी सर इसीलिए मैं चाहूंगी मैम अगर आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंटेशन देंगे तो सर, बहुत तारीफ हो रही है सर हमारे कॉलेज की, डबल अपग्रेडेशन मिली है हमारे कॉलेज को, बी ग्रेड से सीधा A+ ग्रेड मैम की लीडरशिप के अंडर, सर के सहयोग से हम लोग सब जा रहे हैं, आप लोगों के आशीर्वाद से। मैम की प्रेजेंटेशन है एक सर, अगर आप 2 मिनट निकाल के देखेंगे तो उसमें हमारे कॉलेज का सब कुछ जितना प्रोग्रेस हुआ है, और अब तो मैम के अंदर हम लोग 10 साल से ज्यादा हो गए, हम लोगों को अभी भी मैम की सर्जरी हुई है 4 दिन पहले सर, और उससे मतलब इसके बजाय चीज है आज जैसे लास्ट में नहीं आ पाए, बट प्रेजेंटेशन आपके पीछे सर आप College में there was a requirement by the affiliation department, an urgent requirement for submission of fire safety certificate,
and which is a very tedious thing to be done because we need to install all the gadgets, equipments, the hose pipes, all the fire equipments, for which our Vice President DSGMC Sardar Lobana ji, he helped us a lot. Lobana ji ने इतना उसमें हमें हेल्प किया, रात दिन, रात को 12 बजे तक कॉलेज में सामान आ रहा है, सुबह 6 बजे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जितने मेट्रो शीट्स का काम था, हॉस पाइप्स का काम था, इंस्पेक्शंस थे, all those small things which contribute for conducting smooth inspection of fire team, and after their report this fire safety certificate is given to the college. तो इसमें लुबाना जी का बहुत बड़ा हाथ है इस कॉलेज को सेवियर करने में. along with जो हमारे मैनेजर सर हैं, चेयरमैन सर हैं, मैनेजर सर तो हमारे साथ हैं अभी, सुरजीत सिंह जी, he was throughout present for continuously 3 months in the college, रात दिन, so that there should be timely arrangement of this fire safety certificate which we can submit to the affiliation department. So students safety is the topmost priority also. So for student safety point of view and for college recognition and affiliation, this certificate was required, which was actually arranged by Lobana ji. So hats off to him. We really acknowledge his sincere efforts. The other feather in the hat is the green generator that we have in the college. वो भी हमारे लोबाना जी और मैनेजर सर, चेयरमैन सर ने बहुत सपोर्ट किया, so that we can have a 100% power backup in the college. जैसी लाइट जाती है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. Previously it was not the case. So अब since you are the students of a A+ category college, so we also would like to facilitate you with all the resources and facilities that we can give time to time, update also, upgrade also, improvise also. अब तो girls common room में भी AC है. So all this because of our supportive management only. So a huge round of applause for our Vice President sir, Manager sir, Chairman sir. So what a glorious morning when I stand before this galaxy of eminent personalities, Honorable our Vice President Sir, Atma Singh Lubana ji, our Chairman Sir, Sardar Rajinder Singh ji, virtually attached with us, and Manager Sir, Sardar Surjit Singh ji, my supportive staff members and all the worthy participants. We are here gathered for the inauguration of 1 week faculty development program on the theme G20, One Earth, One Family, One Future. Established in 2003 by Delhi Sikh Gurdwara Management Committee with the motto Vidya Vicharita Parokari, meaning education induces kindness. Guru Nanak College of Education, with a short yet brilliant history of 20 years, is a pioneer in imparting education to foster all-round development of its pre-service teachers. It is a Sikh minority college offering single course B.Ed with an intake of 100 students. Since it is a 2 years program, so altogether we have 200 students. Self-owned by DSGMC, the land use is exclusive for GNCE. Since it is a one program only, there is full power backup of green generator. College is also having fire safety, lift safety, structure stability, and earthquake resistant certificates along with NCMEI, ISO, Vental certifications. College has been awarded with the highest grade category A by GGSIPO DHE JAG, and the same has been maintained consistently for 9 years in a row by the college. The State Fee Regulatory Committee has also upgraded the college. The State Fee Regulatory Committee has also upgraded the college from B directly to highest category A+, which is the remarkable achievement of the college. Infrastructure facilities include 32 rooms, playground and terrace, subject-wise distribution of students according to pedagogy and elective subjects, air-conditioned classrooms equipped with projectors, smart boards, multimedia computer systems, well-equipped updated labs and resource centers as prescribed by NCTE and GGSIPU,
Koha-mediated library fully automated with barcode, e-learning facilities, online subscriptions of Delnet, OPEC, EduSet. Guru Nanak College of Education is successfully integrating technology across the curriculum through its readily available teaching learning material on college LMS and through various channels for online classes and submission of assignments and record files on MS Teams. College Discipline Committee comprises of several subcommittees to ensure conducive and healthy environment. Presence of a students counseling center with an availability of psychiatrist, psychologist and a counselor on board for students' well-being. Fit GNCE with a mini gym and regular fitness sessions in the college, our students can access to available outdoor and indoor sports equipments to rejuvenate. College has been exploring the ever expanding frontiers of knowledge that go beyond the curriculum to various co-curricular activities like GNC clubs, houses to capture the latest emerging trends in new technology, skills and values by regularly organizing various programs and events. I take immense pride in highlighting my students' achievements at GGSIPU Annual Fest Anugunj with striking gold in competitions like extempores, debate, creative writing, declamation, collage making, silver in competitions like vase decoration, quiz, folk dance, painting, kirtan competition. They also actively participate in literary and creative events organized by the university, various gurudwaras, institutions, and colleges. Adding another feather to our hat, we have our budding authors who have well reflected on their learnings and successfully got their books published across various genres. The college has been organizing thoughtfully designed personality development activities for its students like orientations, mock interviews, role plays, group discussions, movie screenings, competitions, industry exposure programs. Next we have a list of schools that we are proudly associated with to ensure enriching plenary school engagement and school internship experience programs. Students imbibe social, cultural, national, environmental responsibility through programs regularly conducted by the college NSS unit. Outside visits include grand celebrations like Delhi Fateh Divas at Red Fort and Veer Bar Divas at Major Dhyan Chand Stadium, GGSIPU Health Mela at Talkatora Stadium, just to name a few. GNC Placement Office conducts campus placement programs, job fairs, vocational counseling, and placement assistance and referrals. The insights and guidance of experienced alumni of college provide a platform for career prospects, advices, mentorship, and professional activities. Under continuing professional development, Guru Nanak College of Education has been hosting a number of workshops, seminars, conferences, along with yearly faculty development programs, both in online and offline mode, so as to enhance the effectiveness of Guru Nanak College of Education family. For this, a 7-day FTP has been commenced from today. So we may say that Guru Nanak College of Education's distinct journey on the path of excellence continues. All of yours unwavering support has been our foundation, and for that we are deeply, deeply grateful. Thank you all for being the part of this incredible journey. Here is to celebrating our achievements and looking ahead for the exciting opportunities that await us. So let us continue this program. Thank you.